Hello students, so after reading the learning outcomes of this chapter, let us start our chapter, that is nutrition in plants. बच्चों, in class 6 you learned that food is essential for our living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, minerals, all are components of food, and these components of food are necessary for our body and are called nutrients. You already had studied about nutrients and different components of food. You all know that all living organisms, चाहे plants हों, animals हों या दूसरे organisms हों, they need nutrition, they need food to grow, to repair, to get energy, to do different life processes. They require food, they require nutrition. So plants can make their food by themselves. अपने आप अपना खाना बना सकते हैं. But animals like us, we cannot. We have to be dependent on other animals or other plants for our food. For example, if we eat vegetables comes from plants. So we are indirectly dependent on other organisms for our food. But plants, how do they make their food? कैसे अपना खाना बनाते हैं? They are also dependent on other animals or other plants, other organisms. No, they make their food themselves. अपने आप बनाते हैं using some raw material which is found in their surroundings. ये अलग बात है. They require some raw material which should be available in their surroundings. They need water, they need carbon dioxide, they need sunlight, and the most essential component is chlorophyll, which should be present in a plant. It is a green pigment. चलिए अभी पढ़ते हैं उसके बारे में. What is photosynthesis? अब देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. आप ध्यान से इसको देखेंगे. वैसे तो मैंने आपको लिंक पोस्ट कर दिए थे जिससे आप अपनी टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चों ने तो ले ली थी, जैसे मुझे मैसेज आ रहे थे कि बच्चे बोल रहे थे उनके पास अवेलेबल हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल नहीं है टेक्स्ट बुक, सो दे कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस लिंक. और अगर नहीं डाउनलोड हो पाई है तो कोई बात नहीं, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसकी पिक्चर ऐसे क्लिक करके मैं आपको सेंड करूँगी. सो देखिए 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. In class 6 you have studied about autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करेंगे, सेंड करेंगे व्हाट इज़ autotrophic mode of nutrition and what is heterotrophic mode of nutrition, and you will also give 2 examples of each. किस में autotrophic mode of nutrition होता है और किस में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. क्योंकि मैं आपको ये 6 में करवा चुकी हूँ तो ये दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी. चलिए भाई, अब आपकी पहेली आ गई हैं. एक मिनट, सॉरी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है. हाँ सॉरी, आपको मेरी पिक्चर नहीं दिखाई देगी, पर कोई बात नहीं, आपको बुक दिखाई देगी. तो मैं इसको क्लोज ही कर देती हूँ. देखिए, भी पहेली भी बूझो की तरह ही क्यूरियस है. बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस ये पूछते हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो पहेली ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स. Now all of you know that heterotrophs are those organisms which depend on other animals or plants, other organisms for their nutrition. वो खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जस्ट लाइक अस, है ना. वो हेट्रोट्रॉप होते हैं. तो पहेली को एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सूझा कि वाई आर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स टू. वाई वी हैव टू टेक फूड. हमें खाना क्यों खाना पड़ता है, हम ऐसे क्यों नहीं बना लेते हैं. तो चलिए इसका आंसर यहीं पे फाइंड आउट करते हैं. हमें इसका आंसर मिलेगा फोटोसिंथेसिस में, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में ही होती है ना. इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स हमें इस चैप्टर में ढूंढने हैं.
where the food factories of plants are located. ठीक है, अगर plants अपना खाना खुद बनाते हैं, where are those food factories of plants located? In which part? Whether food is made in all parts of the body or only in certain parts? And how do plants obtain the raw materials from the surroundings? And how do they transport them to the food factories of the plants? So, answers of all these questions we will find out in this chapter. So, let us start photosynthesis, food making process in plants. So, before going through this process, see this picture, this figure 1.1. This is a figure of cell, picture of a cell. You have seen that buildings are made of bricks. आपका घर बना है तो किस चीज़ से बना है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ अ ब्रिक, एक ईंट होती है. सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी सेल्स. टाइनी कंपार्टमेंट से बनी हो जाती हैं, बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि वी कैन नॉट सी देम विद आर नेक्ड आइज. वी हैव टू यूज़ सम microscope to see them. The cells can be seen only under microscope. Some organisms are made of only one cell. अब आप सोचोगे कि इतने कितने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं. येस, दे एग्जिस्ट. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड of only one cell. They are called unicellular. Again, you had studied this in class 6. What are unicellular organism and multicellular organisms? है ना? So, the cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. In case of animal cell, हर एक cell एक thin boundary से bound होती है. That is called cell membrane. And most cells have a distinct centrally located spherical structure called the न्यूक्लियस. अगर आप सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, देखिए आपको ये एक सिंगल सेल है, तो इसके बीच में आपको एक सेंटर में एक स्फेरिकल से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, दैट इज अ न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो ये आप क्लास 8 में जाएंगे तो सेल के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज सेल, एक चैप्टर है अलग से. तो अभी हम फिलहाल पढ़ लेते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस. तो सेल के बारे में आपको क्यों बता रहे थे? बिकॉज cell contains that green pigment chlorophyll which take part in the process of synthesis of food in plants. And that green pigment is present in leaves. That is why the leaves are of green color. So leaves are the food factories of plants, and the synthesis of food in plants occur in leaves. Therefore, all the raw materials must reach there. Now, which raw material is used to make food in plants? First is water. Okay. Water and minerals present in soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. And carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. So what happens? Water. We are talking about raw material. Water and minerals which are present in soil that are absorbed by the roots and transported to the leaves through xylem. You studied about xylem in class 6. Do you remember? पाइपलाइंस होती हैं, स्मॉल पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती हैं विद इन प्लांट्स which transport water along with other minerals to different parts of the plant. Xylem और phloem के बारे में आपने पढ़ा था ना, ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन थी, डिटेल में तो आपने नहीं पढ़ा था. तो यही xylem वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ पहुँचा देता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली टू द लीव्स. तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ? लीव्स तक पहुँच गए. एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ प्रेजेंट होती है?
एयर में प्रेजेंट होती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. अगर आप एक लीव को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. छोटे छोटे छेद आपको उसमें मिलेंगे. दोज आर कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा तो यही वो स्टोमेटा है जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का. ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे टेक इन. ठीक है. सो इसको अच्छे से समझने के लिए लेट अस सी वन वीडियो. You will learn about the basics of photosynthesis. All living things require food. Humans and animals eat other animals or plants as food, but plants cannot eat like humans or animals. Plants obtain food by preparing it on their own by a process called photosynthesis. Only green plants carry out photosynthesis. The word photosynthesis is made up of two words, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means making or putting together. During photosynthesis, the leaves trap sunlight and use it to make sugar molecules like starch. Light energy is changed into chemical energy, which is stored in the starch molecules. To carry out photosynthesis, plants require four things: light energy, chlorophyll, carbon dioxide, and water. Photosynthesis begins with light striking the leaves of plants. Both sunlight and artificial light, such as from lamps, are suitable for photosynthesis. Chlorophyll is a green pigment found in chloroplasts present in the cells of leaves. The chloroplasts absorb and store the energy from light. The stored energy is then further utilized in the process of food manufacture. Carbon dioxide and water serve as the raw materials for photosynthesis. Plants absorb carbon dioxide from the air. The carbon dioxide enters plants through pores called stomata present on the surfaces of their leaves. From the stomata, the carbon dioxide travels to the chloroplasts where it combines with water to form glucose. The combining of carbon dioxide and water utilizes the energy stored in the chloroplasts. Plants absorb water from the surrounding soil with the help of root hair present on their roots. Water absorbed by the roots is then transported to the leaves through the stem. Here is an equation that summarizes the process of photosynthesis. The glucose produced during photosynthesis is carried through special tubes to different parts of a plant. The above diagram shows the complete process by which food is prepared by green plants during photosynthesis. In this module, you have learnt the following. Green plants prepare their food by a process called photosynthesis. During photosynthesis, light energy trapped by leaves is changed into chemical energy.
Plants require four things for photosynthesis: light energy, chlorophyll, carbon dioxide, and water. Chloroplasts contain the green pigment chlorophyll. They absorb and store light energy, which is utilized in the process of food manufacture. Carbon dioxide enters the leaves through pores called stomata from the atmosphere. Carbon dioxide reaches chloroplasts and combines with water to form glucose. Formation of glucose utilizes energy stored in chloroplasts. Plants absorb water from soil through the root hairs present on roots. Water is then transported to leaves through stem.